Okay, good morning all. Let's start up with the class. Okay, so last time we talked about Java and we have finished up all sort of properties and methods related to different controls that we can add up in a frame, right? So the properties and methods are only this much. Then the next topic is about like last time we discussed also that in case I want the output in a separate dialog box kind of thing, then that option is also available. So in all we have three ways of printing any kind of output. Either we can print the things. So we were talking that outputs can be we can print the output in three different forms. One, we have done that we can use settext method, and with the help of which we can print anything in a control, like if you want to print something in text field or label or whatever. So set text method uske liye use hoga. Second way is that we can print the things in the output area within the program itself, within the NetBeans interface, right? And the third way, we can print the output in a dialog box which comes as a separate dialog box apart from whatever we are working with. So ये तीन तरीके हैं. जो तीसरा तरीका है वो that will to do today. So I'll just move on to uh, NetBeans interface. Now if you can see here, I have given all three kinds of statements, right? Now this line L1 dot set text will print the value in this label. The name of the label is L1. तो जो भी discount amount होगी, this is the same example that we discussed last time. So whatever is the discount amount, that will be printed in this label L1, and this line will print the same discount amount into the output area, which is here in the bottom, right? And the last one is your J option pane, which prints everything in a separate dialog box, right? This is J option pane class, which we can use. The way of writing is J capital, O capital, P capital, and the name of the method is show message dialog, right? And whatever you want to print, like we are printing the discount is, then whatever value of the discount variable, right? So in this way we can print our output in three ways. These are the three ways basically. So let's run this file so that we can see the output. Okay, this is your output window. Now whatever value we print here, like if I print uh, amount, I enter 25,000, let's say, and I'll select 20% as the discount. And when I click on calculate button, we'll find one output is here in the label, second output is here in the output window, right? And third output is, I'll show you the second output. Second output is here in the output window, this output area. And the third one will be a separate dialog box, right? I'll show you that also. Maybe not visible. Now you can see this dialog box will be will appear, and this is separate kind of window where the output is shown. And we have a OK button here too. Just when you click OK, that dialog box will close, right? So I just clicked OK. The dialog box will close now. Then one more thing is that we can there are three kinds of dialog boxes that we can use. One is this message dialog box, and last time I told you
that there's another kind of, there are two more kind of dialog boxes, wherein we can just apart from showing only message, we can also get input. There's an input dialog box with the help of which we can get an input also. And the third one is the confirm dialog box. तो confirm dialog box में okay और yes दो तरह के buttons भी होते हैं, right? So I showed you one slide yesterday, so I'll just open that slide again so that we can see. I'll show you that slide again. So in that slide, you'll find there are three kinds of dialog boxes that we can add up, and there's a picture to show all this. Now, as you can see here, these are the three kinds of dialog boxes. This is message dialog box, जिसका example अभी हमने देखा. We'll get one output here, and there's simple OK button to close that. This is confirm dialog box where we have three buttons. One is yes, one is no, and one is cancel. Yes, if you click yes, the output will be the output received will be true, and if you click no, the output received will be false, and cancel will close this. And the third category is input dialog box where some text field is also there, and a user can enter its own value here. Like if you write enter your name, so we'll get a text field where user can enter his or her name, right? And again we have two buttons, OK will submit and cancel will close this, right? Now the important thing is how will you write these three statements. This we have just seen. This is the example of the message dialog box जो अभी हमने किया था. So joptionpane dot show message dialog, this is the name of the method, then null comma, and then whatever message you want to show there, right? जैसे हमने आउटपुट वाला लिखा था, हमने लिखा था कि the output is this. So and some variable name can also be given, like just we have given that this example, right? So text you want to print and plus the name, the variable and the value of the variable that you want to display, right? जैसे हमारे एग्जाम्पल में डिस्काउंट था, तो हमने लिखा था द डिस्काउंट इज, और बाद में प्लस लिख के डिस्काउंट. सो डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो इस टेक्स्ट के बाद प्रिंट हो जाएगी, right? If you want to use input dialog box, now in input dialog box, what we need to write is joptionpane dot show input dialog. In place of show message dialog, now we have show input dialog. So input dialog box में क्या है? You will get one input, right? There's a text field where user can enter a value. So the text you want to show there, enter your name. So ये यही है, enter your name आपका ऊपर टेक्स्ट आएगा और एक टेक्स्ट फील्ड होगा. जब यूज़र इसमें टेक्स्ट फिल करेगा और ओके करेगा, तो ये वैल्यू जो है वो हम रीड कर सकते हैं. वो रीड कैसे कर सकते हैं? फॉर रीडिंग और स्टोरिंग दैट वैल्यू वी नीड ए वेरिएबल. तो हम इसको इक्वेट करते हैं एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल के, like string n is taken and will have that value whatever user enter there in that input dialog box, right? And the third way is this confirm dialog box. So confirm dialog box will show you either yes, yes, you want to exit, you want to show their want to exit, either the person will click OK or false, no, right? So that value will be received in this variable ch. Fine. So let's try this also in NetBeans software. हम ये तीनों चीज़ें भी एक बार ट्राई करके देखते हैं. अच्छा, one more thing that see, since joptionpane is not the inbuilt class, जैसे हम ये get selected value यूज़ किया था, %, यूज़ किया था, राइट? get selected index यूज़ किया था, get text यूज़ किया, set text यूज़ किया, ये println यूज़ किया. These all methods are inbuilt. You don't have to write anything extra about them. Straight away we use it. But in case of joptionpane, we have to import the class into this. Class basically क्या है कि class एक group of objects है. तो ये हमें ऐड करना पड़ता है बिकॉज ये इनबिल्ट नहीं है, पहले से एडेड नहीं है. सो फॉर एडिंग दिस वी हैव टू एंटर अ इंपोर्ट स्टेटमेंट ऑन द टॉप. सो आपको ये ऐड करना पड़ेगा टॉप पे, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्ट्रिंग डॉट स्टार.
राइट। सो इससे क्या होगा कि जो ये जे ऑप्शन पेन की जितने भी methods हैं that can also be used in this program. Now, if you don't write this then these methods are not readable. I'll show you. मैं जैसे इसके आगे 2 स्लैश लगा देता हूँ। अच्छा ये भी बताता हूँ स्लैश लगाने से क्या होता है। स्लैश लगाने से एक कमेंट बन जाता है, राइट। कमेंट मतलब दिस कमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये जितने आपको ग्रे कलर का टेक्स्ट दिख रहा है दीज आर ऑल कमेंट्स। कमेंट्स आर बेसिकली जस्ट यूज टू गिव सम डिस्क्रिप्शन समवेयर। वो प्रोग्राम के का पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये 2 स्लैश लगाने से आपका ये कमेंट बन गया। नाउ दिस विल नॉट बी काउंटेड। एंड इफ यू सी जे ऑप्शन पेन का वो एरर शो कर रहा है, रेड लाइन आ रही है, दैट मीन्स ये एरर है बिकॉज दैट प्रोग्राम इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, right? To make this compiler understand, we have to add this import statement. Fine. So import से आपका ये प्रोग्राम जो है वो रीड कर सकता है कि ये जे ऑप्शन मेथड है क्या, what is this class about. Fine. So whenever we need to use this J option pane, then you have to write that import statement on the top of so I'll write इनपुट बॉक्स फर्स्ट, इसको हम कमेंट की तरह हाइड कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर योर नेम, राइट। लेट्स रिमूव दिस डिस्काउंट वेरिएबल, हम सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन द यूजर विल एंटर अ नेम यू हैव टू स्टोर इट समवेयर। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग एनी एन ले लेते हैं, राइट। सो दिस वी हैव टू स्प्लिट स्ट्रिंग एन ऊपर लिखेंगे बिकॉज एज पर द कंपाइलर हमें इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन पहले करनी चाहिए। स्ट्रिंग एन लिया, n is equal to j option pane dot show dialog box. So this I'll also hide. Now if you run the program, you'll see the output will be in a separate dialog box where some input has to be done. Fine. So I'll just show you this. I think so. This is the output box that you will see. Enter your name. Your के spelling हमने गलत लिखे हैं तो यहाँ पे भी वही show कर रहा है। तो whatever name you gave here, if I write Gaurav and click OK, so your name will be submitted as Gaurav now in this case, right? Now if you want to print this value n somewhere, like हम यहाँ पे system dot out dot print ln लगा देते हैं and will print the value of n. Now let's run this file again. If I put a amount 25,000, I'll get an input dialog box, right? And so this is the input dialog box. So whatever I write here, Gaurav, let's say, I'll click OK, and you will see now the output window will show you this output. यहाँ पे वो वैल्यू प्रिंट होगी जो यूज़र ने वहाँ एंटर करी। तो ये दिस इज योर input dialog box which receives the input from a user in a separate dialog box, right? So this is the second way, and then we have the third method. Third way is using let me hide all this. And third way is your confirm dialog box. So in place of this message dialog, we'll write show confirm.
confirm dialog, and the text you need to change, I'll put, do you want to exit? Right? So whatever user enters there, it will be returned in the form of an integer. So for that, I need a separate variable. I'll take n1, right? And when you print this, I'll print this n1 also. Now let's see the output. Enter the amount. So whatever amount you enter, select the discount option, click on this. So we'll get another dialog box like this. Do you want to exit? Yes, no, cancel. We have three buttons. When you click on cancel, nothing will happen. This window will be closed. When we click OK, then uh, true will be returned to the variable n1, right? So इंटीजर में ट्रू कैसे होता है? इंटीजर में ट्रू होता है 1, और अगर आप नो करोगे तो 0 रिटर्न होगा. 0 इज फॉल्स and 1 is true. So let's say I'll put yes. I have clicked on yes. Now let's see the output. You'll see output is 0 here, right? For z is for yes it will be 0, for no it will be some other number like 1, right? So that's the use of these three kind of dialog boxes that we can use. Also ये printing करने के तीन तरीके हैं, right? So one is using set text method, one is using system.out.println, and third one was your dialog boxes, right? It can be message dialog, it can be input dialog, or confirm dialog, whatever you want to use, right? So that's it about message dialog boxes. One thing I wish to add up here is that ये जो system.out.println है, इसमें भी दो वेरिएशंस हैं. एक है system.out.print और एक system.out.println. Now, what is the difference between these two? System.out.print will print everything into single line, and when you try to print when you write system.out.println, then it will print in the next line, the new line. ln is used to add up a new line, right? So अगर आपको नेक्स्ट लाइन में प्रिंटिंग करनी है तो ln लिखना है. अगर आपको उसी लाइन में प्रिंटिंग करनी है जिसमें पहले हुई थी, तो ये ln आप रिमूव भी कर सकते हो, राइट? So these are the two ways of printing, right? That's the only difference, that if you remove ln, printing is done in one line only, जितनी बार भी आप print statements डाल रहे हो. और अगर आप ln लगाओगे तो वो हर बार separate लाइन में, नेक्स्ट लाइन में, न्यू लाइन में प्रिंटिंग होगी, राइट? Okay, coming back to the book. Okay, that's it all from this chapter. This chapter is over. Now we will start with the second chapter of Java programming. Now in this we'll try to learn कि ये जो हम बात कर रहे थे अभी, जैसे मैंने बात की है कि J option pane class we have to add, right? Now what are these classes? This will talk about here, right? Now before we jump into classes, we should know the basic things first. पहली चीज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, राइट? ये प्रोग्रामिंग करने का एक मेथड है, एक तरीका है, right? This is the way of writing the programs, right? So and after this we'll also understand what are variables and how we can use them, and what are the different kinds of data types that we can use in NetBeans, and then we'll learn about different kind of operators that we can use
So likewise we'll do all this one by one. So the पहला क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है क्या. If you talk about older languages, like if you talk about C language, now in C language, जिसको हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, प्रोसीजरल मतलब जो पुरानी थी, अब उनमें क्या होता था कि methods were used there, but the thing was that data was kept open for all the methods, right? So data is kept open, कोई भी मेथड उस डेटा को यूज कर सकता था. उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि इन केस वन मेथड डू सम चेंजेस इन द डेटा, तो उसके बाद बाकी सब मेथड्स के लिए वो चेंज डेटा जो है वो अवेलेबल होता था. पुराना डेटा जो ओरिजिनल डेटा है दैट इज लॉस्ट. So anybody can change, any method can change, right? So the data is insecure there. In general terms, if we say the data is insecure because it is open for every methods to access, right? So to overcome this problem, this object-oriented programming concept was launched. Now, in this programming concept, what we do is that we wrap up the data and its member method into a single unit. हम क्या करते हैं कि डेटा और मेथड्स को रैप करके, रैप करना मतलब उनको इकट्ठा करके एक सिंगल यूनिट बना देते हैं. तो उस मेथड को जो भी डेटा चाहिए या उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो उस मेथड के यूनिट के अंदर ही अवेलेबल होता है, right? And no other method can directly access that data, and we can put some kind of conditions where data access होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वो हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. We can control that. So that's the big advantage of object oriented programming, that data security is there, data is safe now. The emphasis is given on the safety and security of the data, right? So that's the main difference between object oriented programming. Now here we wrap up all the data and the methods, जिन methods को वो data चाहिए, into a single unit. We create a single unit. इस term को हम बोलते हैं data encapsulation. This term is very important. ये terms जो हैं object oriented programming की बहुत important है कि what is data encapsulation. You should know what is data encapsulation. Encapsulation का मतलब है data और उसके related methods को रैप करके एक सिंगल यूनिट में रख देना. दैट इज डेटा इनकैप्सुलेशन. रैपिंग अप ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेथड मेंबर्स, मेंबर मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एज डेटा इनकैप्सुलेशन. ठीक है. सो अब ये यूनिट क्या है? ये यूनिट, हम इन यूनिट्स को हम बोलते हैं क्लासेस. ये जो सिंगल यूनिट बोलता है, दिस सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एज ए क्लास. So in one class we have data, we have methods also, ताकि वो methods जो हैं वो उस data को use कर सके, right? Then there are some special features which we can use in object oriented programming, like there's a feature called as polymorphism, right? So polymorphism allows the programmer to give a generic name to various methods or operators to minimize its memorizing of multiple names. पॉलीमॉर्फिज्म टर्म, वर्ड का मतलब क्या है? पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स. सो पॉलीमॉर्फिज्म इज क्रिएटिंग मैनी फॉर्म्स, right? So multiple forms. So here what we do is, in object oriented programming, one particular operator or one particular method can be used with the same name in different situations. इसको समझने के लिए हम बात करते हैं प्लस की. जैसे प्लस ऑपरेटर है तो प्लस साइन. Now plus sign can be used to add two numbers, whereas in Java plus sign can also be used to join two words. इसको हम बोलते हैं कंकैटिनेशन, जॉइनिंग ऑफ वर्ड्स. जैसे गौरव और कुमार को जोड़ना है तो हम गौरव और कुमार के बीच में प्लस लगा दें तो वो दोनों वर्ड्स को ज्वाइन कर देता है, राइट? अभी हमने प्रोग्रामिंग में देखा था कि जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हमने लिखा, उसके बाद हमने जो स्टेटमेंट लिखी थी द डिस्काउंट इज इन्वर्टेड कॉमा में, फिर प्लस लगा के आगे हमने वेरिएबल का नाम लिखा था. ये प्लस यहाँ क्या काम कर रहा है?
द टेक्स्ट जो उस प्लस से पहले लिखा है, जैसे द डिस्काउंट इज इन्वर्टेड कॉमा में, ये टेक्स्ट है, ये एक वर्ड है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स बोल सकते हैं, उसको जोड़ रहा है किसके साथ, एक वेरिएबल की वैल्यू के साथ. So this plus operator is basically joining these two things together, right? And this plus symbol is also used to add two numbers. When we talk about numbers, when we write 5 plus 2, the answer will be 7. If 5 is a number and 2 is also a number, right? When we join, if you want to join two words like Gaurav and Kumar, you want to join, you can also write Gaurav plus Kumar. So that will join the words. So joining भी कर सकता है plus वाला operator, और additions भी कर सकता है. So one single operator is working in different ways. This is called as polymorphism, where one particular operator or one particular method can be used in different ways, right? So this helps in minimizing the memorizing of multiple names. So we don't have to give separate names to every different methods or every different operators. So one single method or an operator can be used to do different kind of tasks. इसको हम बोलते हैं polymorphism, right? सो ऐसे ही ये ऑपरेटर का एग्जांपल हुआ. ऐसे कोई मेथड अगर हम, जैसे हमने यूज़र डिफाइंड मेथड्स किए थे थोड़ी देर पहले, तो उसमें था कि हम अपनी मर्जी का कोई भी मेथड बना सकते हैं. नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड क्रिएट अ मेथड नेम्ड सम. हम एक सम नाम का मेथड बनाएं. अब उसमें हम जब पैरामीटर्स पास ऑन करेंगे, द पैरामीटर्स इफ वी पास ऑन digital number, your floating point numbers, decimal numbers, it will add those decimal numbers. And if you pass on some integer values, then it can add those integer values also, right? So it main thing is that one single method is handling two kind of data, right? So this is polymorphism, where one particular method or operator can work in various ways, right? Next is inheritance, third different term, inheritance. So inheritance का भी बहुत important role है in Java, because not only in Java, in all kind of object oriented programming. जैसे Java is one object oriented programming language. Likewise we have C++ also, we have various other languages also which works on this concept. तो इनमें सब में एक इनहेरिटेंस का कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है. अब इनहेरिटेंस का मतलब है क्या? नाउ दिस enables the programmer to effectively utilize already established characteristics of a class in a new class. अभी हमने बात की क्लास क्या था, एक सिंगल यूनिट जिसके अंदर मेथड्स और डेटा को हम रैप करके रख सकते हैं. हम यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं कि एक सिंगल क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं या मेथड्स बनाए हमने, वो क्लास के डेटा मेंबर्स और मेथड को we can access in some other class also if we create a sub class of it, right? एक क्लास की डेटा और एक क्लास के मेथड्स को किसी दूसरी क्लास के अंदर यूज किया जा सकता है. This reusability of data members and member methods into some another class, into a new class, or you can say into a new application, this process is called as inheritance. So इससे हमारे लिए फ़ायदा क्या है प्रोग्रामिंग में, कि हमें एक ही पर्टिकुलर वैल्यू को बार बार इनिशियलाइज करना या बार बार क्रिएट करना नहीं पड़ता. So we can simply use the members, methods, as well as the data of one class into some other class, right? तो ये classes वाला जो concept है, classes वाला concept जो है reusability लाता है, so right, so things can be reused again and again. Fine, so this is inheritance. ये जो तीन चीजें हमने करी, encapsulation, this is very important, right? Then polymorphism, again very important term, and inheritance is again very important terms. These important terms are generally asked in exams. And then what is this object oriented programming? This you all must know, right? Major components of object oriented programming is, one is the class, जो भी हमने class किया, अभी example किया था कि that we can create one single unit of member methods as well as data, right? Then we can also create objects of a class. Objects क्या है? Class की copies, right?
ये भी हम आगे करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है. विल टेक सम रियल लाइफ एग्जांपल्स आल्सो. देन वी नीड डेटा मेंबर्स एज वेल एज मेथड. डेटा मेंबर्स हो गए डेटा. एक्चुअली मेंबर्स उस वर्ड इसके साथ लगाते हैं क्योंकि डेटा मेंबर्स मतलब ये क्लास के मेंबर्स हैं. और member methods, in general terms we call them methods, we can also call them member methods, because member methods वो methods हैं जो इस class के members हैं. एक तो member term इनके साथ generally use की जाती है. So we need data and methods. Then important one is we need some access specifiers and visibility modes. एक्सेस स्पेसिफायर जो मैं अभी बात कर रहा था रीयूजेबिलिटी की, इनहेरिटेंस की, कि हम एक क्लास की चीज़ें दूसरी क्लास में यूज़ कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम एक्सेस स्पेसिफायर्स लगाते हैं कि एक्सेस देना है या नहीं देना है, आउटसाइड द क्लास जाना है या नहीं जाना है. कुछ हमने शुरू में किए भी थे कि एक्सेस स्पेसिफायर्स अगर हम पब्लिक कर दें तो वन क्लास मेंबर्स कैन बी यूज एनीवेयर. अगर हम उसको प्राइवेट कर दें तो one class members can only be used within that class, we cannot be used outside the class. So this control we can do with the help of access specifiers, right? So let's talk about this thing one by one. पहले हम classes और objects की बात करते हैं. So class is used to encapsulate data and methods together into a single unit. One class is having some data as well as some methods in a single unit, right? It's a single unit of both the things, right? Now this helps the programmer to keep the data members in various visibility modes depending on what kind of access needs to be provided. So access किस तरह का देना है, इस तरह की चीज़ें हम visibility modes के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं. जो अभी मैं बात कर रहा था, अगर हम पब्लिक कर दें तो वो एक्सेस सबको अवेलेबल है. अगर हम उसको प्राइवेट कर दें तो ये तीन चीज़ें हैं, पब्लिक, private and protected. तीन visibility modes are there. When you make any data member or a method public, so that data member and method or that class objects are available to all other classes. But when you make it private, so they are not available to other classes. When we make them protected में होता है कि वो उस क्लास के जो सब क्लासेस हैं, जो उसकी सब क्लासेस बनेंगे, उनमें हम लोग एक्सेस दे सकते हैं. बट अगर आप बात करो किसी और क्लास को, सेपरेट क्लास को, जो उस क्लास की सब क्लास नहीं है, देयर वी कैन नॉट गिव एक्सेस, right? So these are the access modifiers, or we can say visibility modes, which controls the accessibility of different data members and methods in a class, right? Now we'll talk about what are objects. एक क्लास की कॉपी बनती है. क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टांसेस ऑफ ए क्लास. इंस्टांसेस मतलब होता है कॉपी. एक क्लास की एक कॉपी बनानी, वो इसलिए क्योंकि क्लास जब हम बनाते हैं तो क्लास में हम सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते हैं. One class contains what type of data members we are using there, and what are the names of the methods we are going to use, right? So जैसे हम एक क्लास बना रहे हैं कोई भी, लाइक स्कूल, राइट? अब उसमें मैंने डेटा मेंबर्स बनाए. एक बनाया रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक बनाया एड्रेस ऑफ स्टूडेंट, द नेम ऑफ स्टूडेंट, राइट? सो ये हमने सिर्फ क्या डिफाइन किया कि ये डेटा मेंबर्स, ये वेरिएबल्स डिफाइन हुए. अब उन डिफाइन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज क्या है, दैट वी कैन गिव इन ए ऑब्जेक्ट, राइट? So these objects are the one which are actually holding the actual data. So they are actually the one who holds the data, right? Now there's small example given here. It's a real life example, not related to computers. So when